So friends, welcome to this webinar on how to prepare and pass the CA, CS, CMA, CIMA, CPA, CFA and ACCA exam. Of course, career, remember, is one of the major concern which most people have on this earth. पूरी दुनिया में career is the main problem that people face on this earth. Uh, everybody is worried. Everybody is worried as to what is going to happen to his career. Everybody is worried. How is he going to do well? How is he going to do in his life? Especially the youngsters. The youngsters who are attempting many of these professional examinations, they're always worried. What is going to happen? What is going to happen to my career? And am I going to pass the exam? Is the exam very difficult? How do I prepare for the exam? How do I pass the exam? There are many theoretical subjects. How do I prepare for the theoretical subjects? There are many practical subjects. How do I prepare for the practical subjects? How do I appear for the exam? How do I manage my stress during the exam time? There are so many questions. All the youngsters who are appearing for these exams are always worried about. And this is how made me to think of a program like this. Friends, incidentally, let me just tell you something about myself. I am an MBA, I am a chartered accountant, cost accountant, company secretary, PGDFA, LLB, CFA, all put together. I have got 16 different qualifications which I have gathered in my life. So I thought, why not to make use of my experience for creating a model, creating a template for the youngsters so that they are also able to make use of my knowledge and my understanding and pass the exams. Remember, all these exams need strategy, all these exams need planning, all these exams need preparation, a very systematic preparation. And friends, this is what I'm going to cover in this program today. Incidentally, this program is being also broadcast on the Facebook in case anyone who has not been able to connect on the Zoom for whatever reason can of course connect on the Facebook. So what we are going to cover in this program, I'm sure all of you can see my screen. So can I ask any of the participants to please write down a message in the chat box that you are able to see my screen so that I know that we are on the same page. Can anyone do that? Quickly. Just let me know whether you are able to see my screen. Okay, so I can see a message here and I hope it's in confirmation that you are able to see. Okay, thank you Vinay, thank you so much, thank you Mohan, thank you Sandeep. I'm glad that you are able to see the screen. Fantastic. So हम क्या कवर करने वाले हैं, ये जो प्रोग्राम है करीब 90 मिनट्स का के हम चर्चा करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि ये 90 मिनट्स के प्रोग्राम के बाद आप में से जो भी लोग ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई कैन टेल यू विद फुल कॉन्फिडेंस दिस प्रोग्राम विल हेल्प यू इमेंसली इन पासिंग द एग्जाम फॉर श्योर. So those of you who are students will benefit directly. Those of you who are parents and attending this program will also benefit from this program because you can pass on this knowledge and this understanding to your children, and I am sure this will help them. तो अब देखिए हम क्या क्या कवर करेंगे इस प्रोग्राम में. We'll first of all understand, fix your goal. What do you need to be successful in life, and why make a career in finance? First of all, what is my recommendation?
to all the students who are appearing for these exams, whether the exam of chartered accountancy or cost accountancy or company secretary or MBA or CPA, CFA, CIMA or ACCA. First of all, if you want to pass these exams, first thing that you need to do is fix your life goal. सबसे पहला काम ये करिए कि अपने जीवन का मकसद क्या है, आपके जीवन का गोल क्या है, उस गोल को फिक्स करके लीजिए, उस गोल को पक्का करके लीजिए। अब आप सोचेंगे कि भाई ये गोल का और एग्जाम पास करने का क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है? बिल्कुल रिलेशनशिप है, पक्का रिलेशनशिप है। देखिए, गोल इज लाइक अ लाइट हाउस। गोल इज लाइक ए लाइट हाउस। सो एक शिप को जब वो समुद्र में है और उसको रास्ता ढूंढना है तो उसको सहारा मिलता है लाइट हाउस से। लाइट हाउस को देखकर उसको ध्यान में आता है कि मुझे कहाँ जाना है। सेम इज द केस विद ऑल ऑफ यू। सेम इज द केस विद ऑल ऑफ यू। प्लीज डिसाइड एज टू व्हाट इज योर लाइफ गोल, एंड that life goal of yours will help you to pass this exam, because that will give you the direction. Number 2, you need to understand why do you need to be successful in life. And of course, you and I, everyone on this earth wants to become successful in life, because as we grow, as the life moves, we are going to have many responsibilities, liabilities, obligations, duties. How will we be able to discharge those obligations, those duties, those responsibilities? We would be able to do that only if we have a good and successful career. And that is why every one of us, without any exception, need a good career. And why make a career in finance? Of course, this is the question that you need to ask to yourself. This is the question I cannot answer for you. This is the question that you should ask yourself. कि फाइनेंस में करियर क्यों करना? पर मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने फाइनेंस में करियर करने का क्यों डिसाइड किया। मैंने फाइनेंस में करियर करने का इसलिए डिसाइड किया बिकॉज नंबर्स आई एंजॉय। आई प्लेइंग विद द नंबर्स। नंबर्स हेल्प मी टेक डिसीजंस and I love to take decision. Numbers help me decide the strategy, and I love to decide strategy, and that is the reason why I decided to make my career in finance. What are the options available for you? So this is what we are going to discuss. What are the options available for us to make career in future? Identify your exam objective. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डिसाइड करनी है। दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस कि मेरे व्हाट इज दी माई ऑब्जेक्टिव एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट यू वुड रियलाइज एज वी मूव फॉरवर्ड। हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। रिमेंबर, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू ओनली इन हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, बट रिमेंबर उसके पहले एक और चीज वो ज्यादा जरूरी है, और वो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एज टू हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जाम। देन ऑफ कोर्स इन योर एग्जाम, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम हो, कॉस्ट अकाउंटेंसी के एग्जाम हो, कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम हो, सीपीए का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में आप सब लोगों ने महसूस किया होगा, in all the exams there are theoretical subjects and there are practical subjects. I am also going to share with you friends in this program how to prepare for a theoretical subject. I am also going to discuss with you how to prepare for the practical subject, practical oriented subject. Then we will understand how to write the papers. अब देखिए, एक चीज है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, और एग्जाम की तैयारी करने के बाद जब आप एग्जाम लिखने बैठे हो उस समय आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। व्हाट शुड बी योर अप्रोच व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम। एंड प्लीज रिमेंबर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। you may must have spent a lot of time in preparing and studying, but if you do not write the exam properly, all the efforts that you made in preparing will go in waste. So writing the exam, writing the paper is also an art. How should you
How should you play that art is what we will be discussing in this program. How to present the answers, how to manage the exam related stress. ये सब लोगों की प्रॉब्लम होती है, सब लोगों का एक डर रहता है कि भाई एग्जाम के समय स्ट्रेस होता है. और आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी ये चीज़. मैनी टाइम्स द चिल्ड्रन दे बिकम सो नर्वस, दे टेल देयर पेरेंट्स, I am feeling nervous, I am not going to write the exam, I am not going to go to the examination hall. So much is the stress in the minds of the people of the exam. How do you overcome that stress? How do you, despite the pressure of the exam, how you still live your life happily and spend your time in doing good preparation for your exam? This is what we will discuss. But then of course, how to enjoy success. So God be with you. You pass the exam. So when you pass the exam, how should you enjoy the success, right? So success has to be enjoyed, and that is what we will discuss. And then how to defeat the failure. And this, friends, of course, is a very sensitive topic, and I'm sure you can understand as to why this is a very sensitive topic. Because many a times when people fail, they do not know how to manage the failure. और मैं आपसे कहूँ, what should be our attitude towards the failure? Our attitude towards failure should also be positive. Do not take failure as something which is negative. Take failure also something as a positive. Take failure also something as a stepping stone. कैसे बनाएं failure को stepping stone is also going to be part of this session that we have. Then of course I'm going to discuss with you a few other points. At the end, before we close, we would also be discussing about frequently asked questions. So बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है. What do I do? I cannot wake up early in the morning. What do I do? Is this program really help me build a good career? How do I get that confidence? I do not get confidence at all. How do I gain that confidence? So these are the frequently asked questions, and that also we would be covering, friends, as part of this session. So let's begin. So what are the options available? Of course, it is very simple, as the title itself shows. Today, to make your career in finance, you have the Chartered Accountancy, Cost Accountancy, Company Secretary's course, MBA, you can do CPA, you can do CFA, you can do CIMA, and you can do ACCA. CPA, CFA, CFA, CIMA, and ACCA. Now these courses are conducted by the foreign countries, and they are not India-based programs, and that is why they are a bit more expensive. But the Indian courses, the Chartered Accountancy, the Cost Accountancy, and the Company Secretary's course, believe me, are the fantastic courses. And I would always recommend anyone wanting to make his career in finance is to pursue any of these three courses. They are extremely economical, and if you are dedicated, and if you are committed, and you are prepared to spend time, these are also extremely rewarding. Many chartered accountants, cost accountants, and company secretaries have been holding very senior positions in the corporate world. So those are the options available in India. Very economical and extremely rewarding. But I know many of you are also pursuing other courses. So some of you I know are doing CPA, some of you are doing CFA, some of you are doing ACCA or CIMA. Even if you are doing these programs, the strategy, the planning, the approach that I am discussing with you in this program, the same approach, the same strategy, the same planning is also going to help you in passing those exams as well. So that is these are the options available. अब सबसे पहला सवाल ये है, देखिए क्या करिए कि आपने कोई सा भी कोर्स ज्वाइन किया हो, any of these courses, first identify what is your objective as far as the exam is concerned.
Is your objective is to merely pass the examination? Is your objective is to get 60% marks? Is your objective is to come in the merit list? Is your objective is to pass at least one group? Or is your objective is to pass both the groups together? तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। और क्यों कहता हूं मैं ये कि सबसे पहले आपको ये क्लियर करना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इसलिए क्योंकि आपके जब ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की स्ट्रेटजी क्या हो, आपकी बाकी की प्लानिंग क्या हो, आपकी बाकी की प्रिपरेशन क्या हो। मेरे हिसाब से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका ये होना चाहिए टू पास द एग्जाम। रिमेंबर, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपके 50% हैं कि आपके 85% हैं। बोथ ऑफ यू आर एट द सेम फूटिंग। इफ यू come in the merit incidentally is fine. Why would I say that don't try to target to come into the merit list? Because if you are targeting something, that means you are putting some additional pressure onto yourself. As it is, you are under pressure, you are building some more pressure onto yourself. So have no pressure of setting a target of coming into the merit. Just prepare, just prepare, just prepare. And if you happen to come into the merit, of course, you have a reason to be happy. Now, as I said, कि मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला नहीं हूं कि how to prepare for this exam, but I am also going to tell you as to how to prepare yourself for these exams. अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं ये एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग फ्रॉम द इंटीरियर्स come to the main cities so that they are able to attend coaching and so that they are able to pass this exam. तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो क्या है। सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो है कि डिटर्मिनेशन। फर्स्टली, सबसे पहले यू शुड हैव द डिटर्मिनेशन। नंबर 2, डेडिकेशन। ये जो क्वालिटी, जो 9 क्वालिटीज जो मैं आपको गिना रहा हूं, इनको नोट करके लीजिए, इनको नोट करके लीजिए, क्योंकि ये 9 क्वालिटीज होंगी तभी आप ये एग्जाम्स में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर ये 9 क्वालिटीज आप में नहीं हैं तो फिर आपको ये एग्जाम में कामयाबी मिलना मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। तो आपको क्या करना है, ये 9 क्वालिटीज को नोट करके लीजिए और पक्का करिए कि ये 9 क्वालिटीज दे बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वालिटी? डिटर्मिनेशन। नंबर 2, डेडिकेशन। नंबर 3, डिजायर। Number 4, discipline. Number 5, devotion. Number 6, diligence, मेहनत. Number 7, deserve. You should deserve also. You should deserve also. You should feel that I deserve to become a chartered accountant. You should feel that I deserve to become a cost accountant or company secretary or MBA or CPA. So you must also have the 7th D, which is deserve. 8, decision. I think it's very crucial. And when I say it's very crucial, that means to pursue any of these courses should be your own decision. Should be your own decision, should be your thoughtful decision. It should not be a decision thrusted onto you by somebody. It won't work. But if it is your decision, it will definitely work. So decision. And number 9 is divinity. Divinity. This is my experience. This is what I have felt, I have realized in my life. Divinity plays a very, very important role. So for preparing yourself for these exams, follow these 9 Ds that I have just mentioned. Very quickly, I will also tell you for your benefit: determination, dedication, desire, discipline, devotion, diligence, deserve, decision, and divinity. So this is how you will prepare yourself for these exams. Now let's come to how to prepare for the exam. अब हम move करेंगे कि from preparing yourself for the exam to how to prepare for the exam. Number 1, remember, time management is extremely critical for success. So अगर आपको ये exams में कामयाबी हासिल करनी है, if you want to become successful in these exams,
remember time management. Time management is extremely critical for success. Time management, time management, time management, time management, time management. If you want to be successful in these exams, time management. Remember, time management is a stress management. It's very interesting. It's very interesting. But remember, time management is a stress management. Who will have stress in his life? Someone who is not managing his time well will have stress in his life. But if you are managing your time well, you will not have stress in your life. So remember, time management is critical. Time management is stress management. Stress management is life management. अब देखिए, जीवन है, आसान नहीं है, इसको आसान बनाना पड़ता है, और इसको आसान बनाना ये हमारे हाथ में है। और ये हमारे हाथ में कैसे है? ये हमारे हाथ में इस तरह से है कि हमको क्या करना चाहिए, हमको वही करना चाहिए जो कि सही है। अगर हम वो करेंगे जो सही है तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। It's only when you try and do wrong things that you get into a trouble. So remember, time management is stress management. Stress management is life management, and life management is the key to success in any exam, let alone the exams that we are talking about. अब क्या करिए? Make a plan, right? हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं how to prepare for the exam. So make a plan. क्या करना है उसको, आपको उस प्लान में? Make a plan. How many revisions I have to do for each subject. तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंसी है, सीपीए है, सीएमए है, ये सारे कोर्सेज में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। और वो जो कोर्सेज है उनको डिवाइड किया हुआ है, फाइनल है, इंटरमीडिएट है, ए लेवल है, बी लेवल है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अब जिस ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस ग्रुप के लिए आप एग्जाम पास करना चाहते हैं, मेक अ चार्ट। व्हाट चार्ट? मेक अ चार्ट कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे इसको अब से लेके एग्जाम तक 3 बार पढ़ना पड़ेगा। ये ऑडिट के सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मुझे इसको 4 बार पढ़ना पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के लिए मुझे इसको 3 बार पढ़ना पड़ेगा। डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल करने के लिए मुझे उस सब्जेक्ट को 5 बार पढ़ना पड़ेगा। डू दैट प्लानिंग। एक चार्ट बनाइए और जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को लिखिए और उनके सामने लिखिए कि ये मुझे कितने बार इसको रिवीजन करने की जरूरत है। एंड एवरी टाइम यू डू वन रिवीजन, टिक मार्क इट and indicate how many revisions are remaining. Very important. Remember, ये एग्जाम्स को पास करने के लिए आपको सारे ही सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग होना जरूरी है। So make a plan and write down how many revisions to do of this subject. Make another chart. एक और चार्ट बनाइए। उस चार्ट में क्या लिखिए? उस चार्ट में लिखिए how many days remaining to the exam. यानी कि आज, let's say for example, today we are on 23rd of June और आपके एग्जाम let's say are from 1st September. So that means what? That means आपके पास में जुलाई का पूरा महीना है और अगस्त का पूरा महीना है। That means you got a 62 days and plus you have 7 days. So all put together you have 69 days at your disposal. So make a chart और उसमें बॉक्सेस बनाइए 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61. Make the boxes. Every day morning when you wake up, strike the box which day is over. 65वां दिन खत्म हो गया, उसको स्ट्राइक करिए so that you know कि अभी 64 दिन का समय आपके हाथ में है। क्या होगा इससे? इससे ये होगा कि all the time, consciously and also subconsciously,
you are aware as to how much time is available with you for preparation of this exam, and that is what you should do. अब इसमें एक चीज और आपको क्या करनी है, वो ये, keep a margin of 7 days. So let's say, for example, from today, if you make this chart and you have 69 days remaining before the exam starts, so what you do, don't make the chart for 69 days. Keep a margin of 7 days and write the chart for starting from 62 days. Why 62 days? Because then the 7 days margin that you are keeping with you in your mind is going to be available to you. So आपके कैलकुलेशन में आप ये 7 days को मान के नहीं चल रहे हो, लेकिन ये 7 days आपको एक्स्ट्रा अवेलेबल होंगे जब आप एग्जाम के नज़दीक में होंगे, और ये 7 days आपको बहुत मदद करेंगे. ओके, रेट दी सब्जेक्ट्स इन दी ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी. आपका जो सिलेबस है, जो ग्रुप आप लिख रहे हैं, उसके सब्जेक्ट को लिस्ट डाउन करिए और इन दी ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी. जो सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगता है उसको सबसे ऊपर लिखिए, और जो सब्जेक्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है उसको नीचे लिखिए. राइट इट इन दी ऑर्डर ऑफ द डिफिकल्टी. आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स विच यू फाइंड वीक, or the subject in which you feel yourself to be weak. Identify those subjects. Identify those subjects in which you think you're very strong. Why? It is because you have to spend more efforts on the subjects in which you consider yourself to be weak, and you can spend relatively less time on the subjects in which you think that you are already strong. Now what you do, start the day every day with plan for the day. So when you sit on your study table in the morning, what you must do, you must make a plan that this is what I am going to do today. So list down all the things that you will do. I will study costing, I will study audit, I will study banking, I will study financial services, I will study valuation, I will study merger and amalgamation, I will study international banking, I will study risk management, I will study international finance. So whatever is your priority, जो आपने बनाई है, उसके जो आपने आइडेंटिफाई की है, every day in the morning on a piece of paper write down that this is what I am going to do today. At the end of the day, take a review as to how much of it were you really able to do. It is quite possible that you may not be able to do everything that you planned in the morning, but let me tell you, since you planned it in the morning, you may not have completed the entire thing, but whatever you have achieved is your optimum. And remember, for being successful in all these exams, optimum is what required from you. Begin with what you find easy to work with. So कभी भी जब आप शुरू में बैठे हैं मॉर्निंग में, स्टडी आपने करना शुरू किया, क्या करिए, उस सब्जेक्ट को लीजिए, उस टॉपिक को लीजिए जो कि आपको इजी लगता है. See, psychologically you need to warm up your mind. So early morning when you start your preparation, if you pick up a topic which is very difficult, it will dishearten you, it will demotivate you, it will demoralize you. So there is a full possibility that you might not do anything during the whole day. So instead of picking up something which is difficult, pick up something which is rather easy, rather more interesting, because this way you will be mentally warming up yourself, and when you mentally warming up yourself, it will be easy for you after a while to take up even a difficult subject also. Identify and list all scoring topics. ये अभी जब आप प्लानिंग करेंगे आपके एग्जाम्स की, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको उन टॉपिक्स को लिस्ट करना है जिसमें जहां आपको मालूम है these are the topics which are scoring. That means if I am able to do well in these topics, I am going to get good score. So list all the topics which are high scoring. Likewise, also list the topics which are not so much scoring, because if a topic is not so much scoring, you can afford to spend little lesser time on all such topics. Please remember, time management is very crucial. Time management is very crucial.
Those who will manage their time well will do exceedingly well, and those who will not manage their time, they will be in the confused state of mind, and they will have to face the failure. And that is how you can do the time management. Then complete maximum syllabus, preferably 100%. तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके कोर्स के, वो सीए का हो, कॉस्ट अकाउंटेंसी का हो, सीएस का हो, सीएमए का हो, सीपीए का हो, whichever course that you are pursuing, make sure that you do 100% of the course. It is not advisable to leave anything in option, because sometimes you leave something in the option and you get a question from that area and you are not able to answer. And please remember, in all these exams, 1 mark also becomes crucial. There is a huge difference between 49 and 50. There is a huge difference between 39 and 40. There is a huge difference between 59 and 60. So if you are writing an exam of chartered accountancy or cost accountancy or the company secretary's exam, अगर आपके marks 59 हैं और 60 हैं, बहुत फर्क है. 60 will exempt that subject to you. 59 will not exempt that subject to you. If your marks are 40 and in some other subject you have got 60 marks, you will pass this your examination. But if your marks are 39 and in some other subject you have 65 or 70 marks also, just because your marks in one subject are 39, you will fail in that examination. So therefore, please remember, every mark counts, and that is what you have to keep in mind while doing your preparation. Prepare the topic entirely. Better to do 100% of 2 topics than 70% of 3 topics. Right? So it's always better कि आप जो भी करें पूरा करें और पक्का करें, बजाय इसके कि कुछ पार्ट में करें, because that doing it in part may not really help you. Something already understood, do not overspend time on it. So कोई टॉपिक है आपको आता है, आप उसको अच्छी तरह से समझते हैं, आपको उसमें अच्छी प्रोफिशिएंसी हासिल है, उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है. रिमेंबर, as a psychology, you always like to do something which you already know. And why you like to do something which you already know? Because it is easy for you to do. And given a choice, mind, generally speaking, likes to do simple things. So जो चीज़ आपको समझ गई है, जो आपको मालूम है, उसके ऊपर समय क्यों खराब करना? Because time is limited with you. So don't spend time on something that you already understand and you already know. Focus on learning, conceptual understanding rather than memorizing everything. और देखिए क्या होता है कि you are reading a subject first time and you are not a corporate executive, you have not worked in the industry. तो आपने इंडस्ट्री में काम नहीं किया हुआ है, आपने अभी 12th पास किया है या जो भी आपने एग्जाम पास किया है, उसके तुरंत बाद आप ये एग्जाम, प्रोफेशनल एग्जाम लिख रहे हैं, आपको इंडस्ट्री का आइडिया नहीं है, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, तो नेचुरली किसी चीज़ को समझने में आपको टाइम लगेगा. बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ बेटर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देन टू ट्राई एंड मेमोराइज. याद रखिए, मेमोराइज करके आप क्या कर सकेंगे? मेमोराइज करके आप उसको 2-3-4 दिन या 2-3-4 हफ्ते तक उसको यूज कर सकेंगे. आफ्टर फ्यू डेज और फ्यू वीक्स यू विल फॉरगेट इट. बट अगर आप उसको समझ लेंगे, इफ यू विल अंडरस्टैंड इट, यू विल अंडरस्टैंड इट फॉर एवर. सो देयरफॉर योर फोकस शुड बी इन द प्रिपरेशन ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग and not merely memorizing. Memorizing will not help you. Decide how many revisions you need to have and estimate the time accordingly. Review your time schedule every day. So जो आपने जो चार्ट बनाया है, उस चार्ट को आप क्या करिए, उस चार्ट को आप रोजाना every day you have to look at that chart. इतने दिन बाकी हैं, इतने revisions बाकी हैं, इतने subjects बाकी हैं. Have a review of your plan every day in the morning. And why?
every day in the morning so that you are aware. Please remember, awareness is very very important in life. तो जितना आपकी awareness strong होगी उतना आपकी preparation strong होगी. So make sure that you review it every day morning. Keep changing the subjects and topics for avoiding monotony. अब देखिए आप let's say you are studying about the derivatives और वो डेरिवेटिव्स आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं अलग अलग टॉपिक. अब वो 2 दिन से पढ़ते 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 क्या होगा, एक मोनोटोनी डेवलप हो जाएगी. सो योर माइंड में स्टार्ट फीलिंग बोर रीडिंग दैट डेरिवेटिव. सो ऐसा नहीं कि आप थक गए हो, यू आर नॉट टायर्ड, यू आर स्टिल इन गुड इन अ वेरी एनर्जेटिक स्टेट, बट because you have been studying the same topic for quite some time, your mind has developed boredom. So therefore what you do, change the topic. Don't stop studying, change the topic, pick up something else, pick up costing, pick up financial auditing, pick up internal auditing, pick up internal control, any of the subjects which is part of your exam. Change the subject. So when you change the subject, you will realize that the boredom has gone and you start finding it interesting once again. And after that we come to how to prepare for theoretical subjects. अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि theoretical subjects की तैयारी कैसे करें, practical subjects की तैयारी कैसे करें. और जैसा कि मैंने पहले कहा, you are fresh, you have not worked in the industry. तो जो भी आप पढ़ते हैं everything is new to you. पर्सनल मैनेजमेंट में क्या है, न्यू टू यू. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इज न्यू टू यू. क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इज न्यू टू यू. क्वालिटी अश्योरेंस क्या है, इज न्यू टू यू. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है, इज न्यू टू यू. सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, इज न्यू टू यू. सो एवरीथिंग इज न्यू टू यू. एंड देयरफॉर प्रिपेयरिंग फॉर द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समटाइम्स इज डिस्करेजिंग. What approach should you adopt? This is now I'm going to focus. So keep on reading until you have understood it. So let's say theoretical subject है. Let's talk about कि आप Companies Act आप पढ़ रहे हैं, या आप GST पढ़ रहे हैं, या फिर आप Customs Law पढ़ रहे हैं, या फिर आप Internal Control पढ़ रहे हैं, या फिर आप MRTP एक्ट पढ़ रहे हैं, या फिर आप कंज्यूमर एक्ट पढ़ रहे हैं. तो ये जो सारे एक्ट, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये थ्योरेटिकल हैं. और चूंकि हमको पुराना उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हमको ये थोड़ा बोरिंग लगता है. क्या करना है आपको, बोरिंग लगे लगने दो, परवाह नहीं, पढ़ते रहो. कीप रीडिंग इट, कीप रीडिंग इट, कीप रीडिंग इट. रिमेंबर, यू मे थिंक that you are not understanding anything when you are reading it. It is not so. It is not so. When you are reading it, a theoretical subject, remember, it is being understood by you at a subconscious level. It is being understood by you at a subconscious level. So therefore, fundamental principle for preparing for a theoretical subject, keep reading it. Doesn't matter even if you feel sleepy. नींद भी आए आपको, परवाह नहीं. फर्स्ट टाइम रीडिंग इज ऑलवेज बोरिंग. इट बिकम्स इंटरेस्टिंग फ्रॉम सेकेंड टाइम. यूज हाईलाइटर पेन. कीप मेकिंग नोट्स साइमल्टेनियसली. राइट. तो एक हाईलाइटर पेन रखें आपके हाथ में, उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट दिखाई दे, इंपॉर्टेंट लगे, उसको हाईलाइट करके लें या उसको अंडरलाइन करके लें. और रिमेंबर फॉर ऑलवेज, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम, even in your life, after you pass the exam, whenever you are reading any book or any article, you must always keep on making notes. And why should you keep on making notes? Because notes become very good reference point for you for the future. आपने किताब पढ़ी और पढ़ के उसको छोड़ दिया, it is highly unlikely that you will retain much of that book. But if you make notes, these notes becomes very useful tool for you for enhancing your retention subsequently. So make notes. Never try to memorize, rather comprehend it. अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 2 चीज़ें हैं आपको. 2 चीज़ें हैं, एक है आप मेमोरी और एक है
कॉम्प्रिहेंशन। अब जरा ध्यान से सुनिए कि हम हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन आती है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हम हमारे जीवन में जो भी सिचुएशंस आती हैं उसको दो तरीकों से रिस्पॉन्ड करते हैं, दो सोर्सेस से रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला सोर्स क्या है? पहला सोर्स है मेमोरी। सो व्हेनेवर वी आर रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशन, the response is coming from our memory. And the second source, the response comes from our comprehension. Remember, memory is a temporary resource. Comprehension is a permanent resource. Something that you memorize today, you may forget it tomorrow. Something that you understand it forever. And therefore, even in case of theoretical subject also, your effort should be on the comprehension of it, not on the memorization of it. Some theory is so boring, even examiner will also not read it, right? So बहुत सारे theoretical topics होते हैं जो कि आप तो ठीक है, examiner also will find them boring. These topics you can perhaps leave it for later date. Always ask, can there be a question from this portion? So जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, तो उस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते एक सवाल पूछिए अपने आप से, क्या इस टॉपिक के ऊपर कोई सवाल बनता है? और अगर आपको लगे कि हाँ इसके ऊपर सवाल बनता है, तो व्हाट यू शुड डू, राइट दैट डाउन, राइट दैट क्वेश्चन डाउन इन योर लैंग्वेज ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर. What is the advantage? The advantage is when you write that question, automatically the answer gets arranged in your memory in a very systematic manner, and you will be able to make use of this understanding when you are writing the exam in real life. Now, how to prepare a practical subject? So, having understood how to prepare a theoretical subject, let us now focus on how to prepare a theoretical subject. Now, for a theoretical subject, first, and please pay attention, first understand the logic and purpose of the topic. तो देखिए, जब भी आप लाइफ में कुछ पढ़ने जाते हैं, कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उसका लॉजिक समझ लीजिए, सबसे पहले उसका पर्पस समझ लीजिए. Because once you understand the purpose, once you understand the logic of that topic, what happens? Automatically a vacuum gets created in your system here. So ये जो आपकी मेमोरी है, जो आपका ब्रेन है, वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है. और फिर जब आपने उसका लॉजिक समझ लिया, जब आपने उसका पर्पस समझ लिया, तो ऑटोमेटिकली जो आप पढ़ते हैं वो आपके मेमोरी में रजिस्टर होना शुरू हो जाता है. सो अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड द पर्पस. आफ्टर दैट, गेन सॉलिड conceptual understanding of the topic. तो पर्पस समझने के बाद क्या करना है? उसकी conceptual understanding को गैदर करना है. Connect the concept with real life situation in your mind. So पहले पर्पस को समझा और उसके बाद में उसका जो conceptual understanding है उसको समझा, और अब क्या करिए? conceptual understanding को connect करिए with the real life. This will ensure that your understanding, your comprehension becomes very strong. Solve maximum exercises and problems on the topic. Identify the difficult aspect, solve more problem on the same. तो अभी जैसे for example, you are studying about the project finance and you are studying about the net present value, or you are studying about the internal rate of return, or you are studying about the discounted payback period, or you are trying to learn about the cost of capital, or you are trying to learn about the capital asset pricing model, or you are trying to learn about the income approach, or the cost approach, or the asset approach of the valuation. तो आपको क्या करना है? ये सारे प्रैक्टिकली ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं. तो क्या करिए? थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होने, जब आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, उसके बाद में सॉल्व प्रॉब्लम्स. और उसमें जब आपको लगे कि ये डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट है, ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ये कैसे अराइव करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट इट डाउन ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर, अटैक ऑन इट लेटर ऑन.
एंड दिस इज हाउ यू विल डू. रिमेंबर द लर्निंग कर्व. अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हमें वो डिफिकल्ट लगता है, और जब हमको वो डिफिकल्ट लगता है तो हम डिस्करेज हो जाते हैं. तो आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है. और आपको डिस्करेज होने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जब यू आर ऑलवेज ऑन द लर्निंग कर्व. सो जब आप कोई चीज़ को सीखना शुरू करते हैं, शुरू में वो चीज़ आपको मुश्किल लगती है, और लेकिन जब आप उसको समझ जाते हैं तो वही चीज़ आपको आसान लगने लगती है, और वही चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगने लगती है. सो रिमेंबर, सो वेन एवर यू आर स्टडिंग अ टॉपिक एंड यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, remind yourself, okay, I am on the learning curve. It's all right. It's only for some time that I will find this topic difficult. After some time, this topic is going to be very easy for me. And this is what you should do. Don't look at the solved answer. You know, हम जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारे illustration दिए होते हैं और उनके solved answers भी दिए होते हैं. तो जब आप illustrations को solve कर रहे हो तो पूरी कोशिश करिए कि आप उसको सॉल्व कर पाएं. ऐसा मत करिए कि आपने थोड़ी कोशिश करी और आपने सॉल्व्ड आंसर को देख के मालूम किया कि उसका आंसर क्या है. इट वॉन्ट हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस. फॉर बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस व्हाट यू शुड डू, गिव टाइम टू योरसेल्फ. उसको देखिए, ट्राई करिए, दिमाग लगाइए, और जितना आप दिमाग लगाएंगे कहीं ना कहीं से आपको उसका आंसर समझ में आएगा. जब बहुत मुश्किल हो जाए, पूरी कोशिश करने के बाद फिर आपको आंसर नहीं मिले, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो टू द सॉल्व्ड आंसर एंड सॉल्व इट. नाउ लेट्स फोकस ऑन दी हाउ टू राइट दी पेपर. सो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा कि अपने आप को कैसे तैयार करें एग्जाम के लिए. तो जो मैंने आपको 9 D's बताया, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिजायर, divinity, those 9 D's you have to remember to prepare yourself. And after that we talked about how to prepare for the exam. Now we are going to discuss how to write the paper. अब वो पेपर कैसे लिखें, this is what we will understand. Okay, so how to write the papers. Number 1, be fearless and confident. जब भी आप पेपर लिखने के लिए घर से निकलें, एकदम निर्भीक होके निकलें, एकदम कॉन्फिडेंट होके निकलें. डोंट हैव अ डाउट इन योर माइंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द एग्जामिनेशन. एम आई गोइंग टू फेल इन द एग्जाम? डोंट हैव दोज नेगेटिव थॉट्स. हैव एब्सोल्युटली पॉजिटिव थॉट्स. फील फियरलेस. डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. यू आर ओनली गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल एंड नॉट ऑन टू द बॉर्डर. So therefore, you have no reason to have a fear in your mind about the exam. Face it with full confidence. अब मैं आपको एक चीज बताऊं, how to get the confidence. ये बहुत सारे लोग सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर सब कुछ ठीक है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता है. कॉन्फिडेंस आने के लिए क्या करें? तो कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको ये समझना होगा कि कॉन्फिडेंस है क्या. और मैं आपको बहुत सिंपल शब्द में बताऊं, व्हाट इज कॉन्फिडेंस. Where does it come from? It is not a vegetable that you go and buy from Monday. It is not a car that you buy from a automobile showroom. What is confidence? Confidence is very simple. And where does it come from? That is also very simple. What is confidence? Confidence is your ability to handle a situation. And remember, where will you get this ability to handle a situation? You will get this ability to handle a situation from your preparedness. From your preparedness. So what is confidence? Friends, is very simple. Confidence is equal to preparedness. Until the time, जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं है, you will not feel confident. The moment you are prepared, the confidence will come automatically to you. You do not have to go and ask anybody and ask yourself कि भैया मैं confident हूँ क्या. जैसे ही आपकी तैयारी पूरी होगी, confidence will come automatically. अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताना चाहूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि आपको मालूम है कि जब आप दूध गर्म करते हो तो दूध कब उफान पे आता है? दूध उफान पे तब आता है जब उसका टेम्परेचर 100 हो जाता है.
तो जैसे ही टेम्परेचर 100 हुआ दूध उफलने लगता है। याद रखिए उसी तरह से जैसे ही आपकी तैयारी पूरी हो गई, कॉन्फिडेंस उफन के बाहर आता है। सो व्हाट इज कॉन्फिडेंस? रिमेंबर, कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट प्रिपेयर्डनेस। तो कभी आपको लगे कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आस्क योर सेल्फ, एम आई फुल्ली प्रिपेयर्ड? और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में कमी है। सो क्या करिए? कंप्लीट दैट प्रिपरेशन। एंड द मोमेंट यू कंप्लीट दैट प्रिपरेशन, automatically the confidence will come. It has to come. So how to write the paper? Number 1, be fearless, be confident. How to get the confidence? Confidence you will get from the preparation. As soon as अब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे और आप बैठे and the paper is given to you in your hands. How should you react? As soon as you receive the paper, relax for a while and then go through the entire paper. तो जब कुछ लोग पेपर आते समय भी घबरा जाते हैं, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट अ पेपर, इट्स लिटरली अ पेपर। ओके, सो वो पेपर हाथ में आया, रिलैक्स, 2-3 लंबी गहरी श्वास लें, टेक 2-3 डीप लॉन्ग ब्रेथ, लंबी गहरी श्वास लें, अपने आप को रिलैक्स करें, राइट? और उसके बाद में क्विकली गो थ्रू द एंटायर पेपर। क्यों? वाई शुड यू गो थ्रू द एंटायर पेपर? बिकॉज राइटिंग द एग्जामिनेशन, राइटिंग द पेपर इज ऑल्सो अ स्ट्रेटेजी। वो पेपर में 8, 10, 12 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से 7-8 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये 12 क्वेश्चंस में से, 10 क्वेश्चंस में से जो 8 या 6 क्वेश्चंस मुझे करने हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो मैं करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चन पेपर, you have to quickly find out in your mind, this is what I will do, this is what I will do, this is what I will do, this is what I will do. And not only that, now what you have to do, now you have to arrange it in the order in which you will solve those questions. So जो आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग लगे, जो आपको सबसे ज़्यादा इजी लगे, उसको टॉप पे रखिए। जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे और जिसमें आपको लगे कि स्कोरिंग के चांसेस कम हैं, उसको बॉटम में रखिए। सो स्टार्ट विथ समथिंग विच इज इजी, स्टार्ट विथ समथिंग विच इज मोर स्कोरिंग एंड go down to something which is less scoring and which is something more difficult, right? So this is what you should do. So plan this presentation in your mind. अब और एक चीज आपको करनी है, वो क्या? वो ये कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं, invariably you will see those questions do not have the uniform marks. तो कोई 12 नंबर का है, कोई 17 नंबर का है, कोई 20 नंबर का है। सो this is how you will see this is how you will see that the papers will have. So अब आपको क्या करना है? आपको टाइम एलोकेट करना है कि इस क्वेश्चन को कितना समय देना है, इस क्वेश्चन को कितना समय देना है। तो वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? वो आपको डिसाइड करना चाहिए बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ ईच ऑफ द क्वेश्चन। सो अगर एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली यू शुड गिव मोर टाइम टू इट। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली यू मस्ट गिव लेस टाइम टू इट। इफ यू मेक द मिस्टेक बाय ओवरसाइट of giving equal time to both these questions, you can very easily understand that it is not going to work in your favor. So what you do, plan your presentation in your mind and also rank the questions in the order of scoring and in the order of your understanding. Start with the easiest one. So obviously, तो क्या करना चाहिए? जो सवाल आसान है उनको पहले करिए। कॉन्स्टेंटली कीप एन आई ऑन योर वॉच। घड़ी आपके हाथ में है, बहुत ज़रूरी है कि आप समय का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ना हो गलती से। और मुझे मालूम है कई सारे केसेस कि लोग एक आंसर को लिखने में इतना समय लगा देते हैं कि बाकी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए समय बचता ही नहीं है। एंड रिमेंबर, यू मे राइट ऑल दी 3 hours on one question,
you will get maximum 20 marks only out of that, not more than that. And that is what you should do. Quick review of whatever you have done once in a while. So बीच बीच में क्या करें, बीच बीच में रिव्यू करते रहें कि ये कितना मैंने कर लिया है, कितना मुझे करने का बाकी है. Relax your mind for few seconds after every question you have answered. So ऐसा नहीं है कि 3 घंटे का पेपर है, आप धपाधप लिखते जा रहे हैं. नहीं, बीच बीच में अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए, थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिए. एंड हाउ डू यू गिव द रेस्ट? वेरी सिंपल. यू जस्ट फिनिश द क्वेश्चन, पेन छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, थोड़ा सा फिंगर्स को प्रेस करिए, मुट्ठी बना के प्रेस करिए. एंड दिस इज हाउ यू विल गिव रिलैक्सेशन टू योर माइंड. एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हाट यू डू, लंबी गहरी सांसें लें. टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें. दिस इज हाउ यू continuously keep relaxing your mind. Please remember, when you're writing the exam, who is helping you? When you're writing the exam, your mind is helping you. So if your mind is helping you, what you should do? You must help your mind. And how do you help your mind? You help your mind by giving some rest in between for few seconds. And that much is good enough. A rest of 20 seconds to your mind is good enough. And remember, these 20 seconds are very useful to you, because in these 20 seconds you are also able to prepare your further strategy कि अब मुझे क्या करना है. In case of any nervousness during the examination, take few deep long breaths. Don't get stuck up with a difficult question. Don't over answer a question. You will end up under answering another. जैसे कि मैं पहले कह रहा था, गलती से भी अगर आप एक सवाल को आंसर करने में बहुत समय लगा देंगे, बाय डिफॉल्ट अदर क्वेश्चंस विल गेट लेस टाइम, कॉन्सिक्वेंटली लेस मार्क्स, कॉन्सिक्वेंटली लेस स्कोर फॉर यू. सो डोंट ओवर आंसर ए क्वेश्चन. इन द बिगिनिंग टिक मार्क द क्वेश्चंस दैट यू वुड अटेम्प्ट. तो शुरू में जब आपको एग्जामिनेशन पेपर आपके हाथ में आया, उस समय पर ही आप मार्किंग कर लें कि ये करना है, ये वाला करना है, और इसको पहले करना है, इसको 3 नंबर पे करना है, इसको 5वें नंबर पे करना है, इसको 8वें नंबर पे करना है. वॉट एवर दैट यू मस्ट राइट डाउन, सो दैट यू डू नॉट हैव टू थिंक एवरी टाइम. कि अब क्या करूं. आपने पहले ही प्लान बना लिया, जस्ट फॉलो दैट प्लान. वंस अटेम्प्टेड, मार्क देम सो एंड ऑफ राइट. Now, how to present the answers? अब देखिए friends, you can feel it. It's a science. Passing the examination is a science and also an art. And देखिए अब हमने पहले क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि how to prepare yourself for the exam. Then हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया how to prepare for the exam. अब उसके अंदर भी हमने क्या डिस्कस किया, how to prepare for theoretical subjects. फिर हमने क्या डिस्कस किया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. एंड उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया हाउ टू राइट द एग्जाम. नाउ इवन आफ्टर डिस्कसिंग हाउ टू राइट द एग्जाम, नाउ वी कम टू हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पास करने में नॉलेज जरूरी है, पक्की बात है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आप उस नॉलेज को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोगों की नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन बराबर नहीं है. द वे दे राइट द आंसर इज नॉट करेक्ट. एंड सिंस द वे दे राइट द आंसर इज नॉट करेक्ट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव गुड नॉलेज, दे डोंट स्कोर मच मार्क्स. Whereas some people who may not have as much knowledge as others have, but they write the examination, they present the examination paper in such a beautiful manner that they get more marks than the ones who have a better knowledge. So अब हम discuss करेंगे the tips how to write, how to present the answer, how to write the answer. First of all, अब देखिए, पहले आपके सामने जो क्वेश्चन जिसको आप आंसर करना चाह रहे हैं, आप उसको क्वेश्चन को पढ़ के लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, there is a question. What is the question? The question is, what is cost of capital? How the cost of capital can be determined? What are the uses of cost of capital?
what precautions need to be taken while determining the cost of capital. तो ये एक क्वेश्चन है जो कि पेपर में दिया हुआ है. अब इसको आंसर करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, धर 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 करके आपने लिखना शुरू कर दिया, खट 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 करके आपने पूरा आंसर फिनिश कर दिया. दूसरी अप्रोच क्या है? दूसरी अप्रोच ये है, गो स्टेप बाय स्टेप. व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सो पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको अंडरलाइन करिए. नाउ राइट डाउन व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. नाउ स्टार्ट द सेकंड पार्ट. अगेन राइट डाउन uses of cost of capital, and now write down your answer. These are the uses of cost of capital 1 2 3 4 5. What is the third part of this question? Third part of this question is how to determine the cost of capital. Now start the third part. Again third, I write third and write the means to determine the cost of capital. उसको लिखिए, underline करिए. Now you write down different means of determining the cost of capital, and then you come to the part 4. And what is the part 4? Part 4 is what precautions to be taken in computation of cost of capital. Now what you do? Now you start the part 4, and now you write precautions to be taken in determination of cost of capital. उसको लिखिए, उसको underline करिए, and now you write 1 2 3 4 5. Remember, when you will write your question, you will answer this question in this systematic manner. The examiner is bound to be impressed with your presentation, and he is definitely going to give you much better marks than rest of the people. And why is that so? Please understand. Examiner is trying to assess what? Examiner is not only trying to assess your knowledge of the subject. Examiner is also trying to assess how analytical you are. So when you write an answer in a very systematic manner, as I have just explained, the examiner gets that impression that look, this boy is not only having good knowledge, but he is also analytical, and therefore you will get good marks. So remember, the first thing what you do, go step by step when you are giving the answer. Number 2, write in small paragraphs. Never make the mistake of big paragraphs, because when you write big paragraphs, remember the examiner may not feel encouraged to read a long paragraph. The examiner will try to assess as to what you have written by reading 1 or 2 lines, and therefore if you write a lengthy paragraph, you will discourage him from reading it. Give suitable headings as asked in the question. So जब भी आप कोई क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, उसकी हेडिंग देना मत भूलिए. Why you should give the heading? Because it automatically draws the attention of the examiner. तो आपने हेडिंग दिया cost of capital, आपने हेडिंग दिया how to determine cost of capital, आपने हेडिंग दिया what are the uses of cost of capital, आपने हेडिंग दिया what precaution to take in case of cost of capital. So when you give the heading, remember, you are making the life of the examiner easy and simple, and he would appreciate, and if he appreciates, of course he would give you better marks. Write clearly even if you do not have good handwriting. So this is the dilemma, this is the question. A lot of people ask me many times, sir, my handwriting is not good, what do I do? Remember, the examiners are trained not to get influenced by the good handwriting or the bad handwriting. If your handwriting is not good, it's perfectly fine. So long as your handwriting is readable, I think is good enough. So what you need to ensure, when you are writing the answer, you must write the answer in a handwriting which is readable. Because if your handwriting is not readable, how will the examiner assess you? So what you do, just practice.
And even if your handwriting is not very beautiful, it doesn't make any difference. Write in a way so that a person can read it, and that will be good enough for you. Make use of tables and pictorial presentations. Always good, always advisable, always recommended. Make tables, make diagrams, make arrow chart, because that explains your answer much easier in much simpler way. So do that. And then of course you have to write the quality content. Don't attempt to write too much and fill pages. Lot of questions, lot of times I get this question, sir, if I write long answers, will I get more answers, more marks? And the answer of course is, the length of the answer has got nothing to do with the score that you get. What is relevant for you to get good score is the quality content that you write. Write point-wise point. There are no conscious marks for neatness and presentation, but they are in subconscious mind. Please remember, any examination paper will not say that there are 5 marks or 10 marks for neatness or presentation. It will never say, but consciously it may not be there, but subconsciously it is definitely there in the mind of the examiner. तो आपकी जो आंसर बुक है नीटली लिखी गई है और बढ़िया तरीके से प्रेजेंट हुई है, subconsciously the examiner will get somewhere influenced little bit, and there is a full possibility that you might get 1 or 2% extra marks. And remember, though, those 1 or 2% can make hell of a difference in your passing the exam. Make opening of the answer absolutely crisp and clear. Within paragraphs, highlight, underline the important points. Do not write confusing and ambiguous matter. So when you're writing, more so in the beginning of the answer, don't write something which is confusing. Don't write something which is ambiguous. Don't write something which can be contradictory, because you are creating a bad impression in the very beginning itself. It will not work in your favor. Let's now look at arrange the answers mentally before writing in the answer book. Let the speed in writing of the answer come by itself. So do not try to rush and write too fast in an attempt to write fill more papers. No, don't do that. Write comfortably. Let your handwriting come systematically. In case of a question you do not know the answer or you are not sure of the answer, attempt it in the end. तो कोई सवाल है जिसका आंसर आपको नहीं मालूम है और या फिर आप उसके बारे में श्योर नहीं है, don't write the answer of that question in middle or in the beginning. Always take it in the end, because let you not spoil the mood of the examiner when he is going through your answer book. Sometime it happens time is left. अब क्या हुआ, द पेपर आपने जो लिखना था लिख लिया, जो आपको आता था आपने लिख दिया, कुछ समय बचा है और एक सवाल भी, एक क्वेश्चन भी बचा है. So now what do? Time is remaining, a question is also remaining, but you are not confident as to what is the answer of this question. So what you should do? Should you leave this question? No, you should not leave this question. Even if you do not know the answer, since you have time, think about it. Try and structure your thoughts and present whatever you can present. Answer to that question in the end in a very systematic manner. There is a full possibility that you will get good marks on that question also. Never leave a question halfway. So कई बार, sometimes somebody was telling me that the last question you should leave, half sentence. You should end with half sentence so that the examiner will think, he knew the answer, but he did not give the answer because he did not have the time. No, don't make that mistake. Conclude the question, whatever it may be, because then the examiner gets the impression, okay, he has answered it in full, so he will psychologically be inclined to give you marks accordingly.
Now, how to manage exam related stress? So, stress is, remember, stress is inversely related with your preparation. Better the preparation, lesser the stress. Lesser the preparation, more is the stress. In any case, never let the stress be better of you. Planning, time management, regular physical exercises, breathing technique, meditation, pranayam, these will help you in managing your stress of the exam time. Have a goal. Goal will help you to remain focused. Goal will help you to make a action plan that will reduce your stress. Follow a fixed regimen. अपना एक routine बना लें. Have a timetable and follow that timetable of during the entire period of the preparation. Don't sit continuously in the chair for a long time. Get up after 1 hour. So if you are sitting continuously or in a chair for a long time, that will also cause stress. So what you should do after 1 hour, just stand up, take a stroll, go and drink water, and go here and there and come back and start. So take that break. Relax for 5-10 minutes in between the preparation. So 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एक 5-7 मिनट के लिए बैठ जाओ, लंबी गहरी श्वास ले लो एंड थोड़ा ब्रीदिंग कर लो. तो दैट ऑल्सो विल remove the stress from your mind. Eat healthy food, drink lot of water at regular intervals. So this is what will help you manage your stress during the exam time. Now friends, सब हो गया, खुद को तैयार कर लिया, एग्जाम की तैयारी कर ली, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तैयारी कर ली, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तैयारी कर ली, एग्जाम कैसे लिखना चाहिए वो देख लिया, पेपर कैसे लिखना, आंसर कैसे लिखना है वो भी देख लिया, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है वो भी देख लिया. नाउ एग्जाम लिखा, रिजल्ट आया एंड यू हैव पास द एग्जाम. नाउ यू हैव पास द एग्जाम. सो हाउ डू यू एंजॉय योर सक्सेस? नंबर 1, remember, nothing succeeds like success. Results are out, you have made it, it's time to enjoy, and you must enjoy. Pay respect to your parents and elderly persons in your family. So when you get the result, you pass the exam, go and bow down to your parents, to your elderly persons, take their blessings. Visit a nearby temple, thank the Almighty for making you successful. Remember, when you will do it, it will make you humbler. And I can tell you, there is no quality better than being humble. An attitude of gratitude, remember, is positive attitude. Call up your teacher, guides and friends who helped you in preparation, in passing the exam. Call them, thank them. If possible, go and meet them. Enjoy the day, celebrating and making that positive feeling become a long-lasting memory. So the day you get your result, the day you pass, remember, it is one of the happiest days of your life. So the feeling that you are experiencing after passing the exam, make it a memory in your mind. And why should you make it a memory in your mind? So that it will become a motivator for you in future. Become humbler and resolve to become useful to the society. So when you pass the exam, you must make a determination. I'm going to be useful to the society. Start planning for the next mission, next examination. Life is extremely precious. Make use of every moment. Do not talk about your result before someone who could not make it. So this is how you enjoy your success. So don't talk about your result, unfortunately, if someone who has not been able to make it. Second situation, it can happen. Remember, it's life. It's life, and we all understand. It's not that every time you make an attempt and you pass. Sometime, for some reason, you may not make it. You may not get the result that you wanted. So what in case if you are not able to have the success and you have a result which is negative? So what should you do? Do as Thomas Edison did. And what
Thomas Edison did? Thomas Edison is supposed to be the inventor of the bulb. And do you know how many times he failed in developing that bulb? It is said that he failed 999 times. He failed 999 times in developing that bulb that you see. And finally, he succeeded. So somebody asked him that you failed 999 times. And Thomas Edison said, no, I did not fail 999 times. I came to know as to how not to make the bulb 999 times. So if you fail for some reason, what should you do? Do what Thomas Edison did. What you do? Become angry and do what Gandhi did. So if you fail in the examination, so what? Become angry and do what Gandhi did. And what Gandhi did, you know, Gandhi was thrown out of a running train. All of us know, in South Africa. He was traveling with a valid ticket in a train. And the TT asked him to get down. He refused. And he was thrown out on a station from a running train. What Gandhi did? Gandhi became angry. And what was the anger for? The anger for, he said, today you have thrown me out of a running train. One day I will make sure that you are thrown out of my country. So if you fail, so what? How does it matter? It's never end of the road. Doesn't really matter. There are so many people who have failed in the past. There will be so many people who will fail in future. Doesn't really matter. Enjoy the failure as much as you will enjoy the success. What you do, make your failure a stepping stone. Do not worry about it. Use every failure as a stepping stone. Make a resolve to make it next time. पक्का करिए, इस बार रह गया परवाह नहीं, अगली बार करके दिखाऊंगा और ऐसा करके दिखाऊंगा कि सब लोग दंग रह जाएंगे. Do not let a negative thought overpower you. अब देखिए फ्रेंड्स, हम सबको मालूम है कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं, they go into depression. And what is depression? Depression is to have a negative thought on your mind persistently. And what this negative thought is doing? This negative thought is consuming your energy, is eating your energy. And when the whole of the energy of your body is eaten away by this depressing negative thought, then you feel depression and then you feel down and out. So what you do is, okay, fine, I failed, so what? So what? It's not that it's not that someone has failed first time on this earth. Millions and millions of people have failed and they have succeeded subsequently. I am also going to be one who will be succeeding subsequently. Do not think negative. Do not think as to what has happened. Think about what is going to happen. Do not regret about what you did not do, what you could not do. Start planning as to what you are going to do. So do not let a negative thought overpower you. Rather, you overpower your mind. Remember, best of the success in the world emanated from failure. Analyze, find out what went wrong and why. Make corrections. It's never end of the road. ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम में फेल हो गया तो बात खत्म हो गई, दुनिया खत्म हो गई और सब कुछ खत्म हो गया. नहीं, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं. बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है. बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है. स्टीव जॉब्स वाज आल्सो कॉलेज ड्रॉप आउट. धीरूभाई अंबानी was filling petrol pump on some petrol pump in some country. So it's not that people haven't failed. Doesn't really matter. So what? It's perfectly fine. I'm going to use this failure as a stepping stone and do that. Every failure, remember, is an investment and cash it. So
Do some good charity and spend some time in prayers. Now, this is what I would recommend. Spend some time in prayer. You are a failure only when you give in. तो जब तक आप हथियार डालते नहीं हो, remember you are not a failure. It's only when you say अरे बाप रे मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, then you will be termed as a failure. So till the time you have the fighting spirit in you, you are not a failure. So think it that way. And remember, failure is what? Failure is only an indication. Indication of what? Failure is only an indication that the efforts were not enough. Period. So what you need to do? Increase the efforts. So when you increase the efforts, you will of course achieve the success. Other points to remember, and 5 more minutes and then we'll conclude. For God's sake, do not doubt your memory. So बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एग्जाम जाने से पहले डरने लगते हैं, अरे जो मैंने तैयार किया है मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, वो एग्जाम में याद समय पे याद आएगा कि नहीं आएगा. Don't doubt your memory at all. Don't indulge in excessive talking before the exam. So पेपर के पहले ज़्यादा बात मत करिए. Don't waste time in any case. Don't study till the last moment. अब बहुत सारे लोग हैं जो कि पेपर 10 बजे शुरू होने वाला है और घुसते घुसते भी वो पढ़ते रहते हैं. ज़रूरत नहीं है. जितना आपने पेपर के पिछले दिन तक पढ़ लिया उतना मोर देन सफिशिएंट है. जिस दिन आपका पेपर है उस दिन पूरी तरह से रिलैक्स करिए. पढ़ाई करी है तो भी रिलैक्स करिए, पढ़ाई नहीं करी है तो भी रिलैक्स करिए, क्योंकि उस दिन की पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है. उस दिन की पढ़ाई से उल्टे आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा, डाउट पैदा होगा और आप अननेसेसरली अपने आप को प्रेशर में लेके आएंगे. डोंट डू दैट. फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन. Take adequate sleep and rest on and before the day of exam. Keep yourself mentally and physically fit. Go for morning walk. Don't force yourself to study. तो क्या होता है, कई बार पढ़ते पढ़ते आपका मन करता है नहीं बहुत हो गया, पढ़ने का मन नहीं है. अगर पढ़ने का मन नहीं है, drop it. Relax for some time. Doesn't really matter. आप एक आधा पौना घंटे का एक दिन का ब्रेक ले लोगे, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप अपने आप को फोर्स करोगे पढ़ने के लिए तो आप अननेसेसरली अपने आप को मेंटली ओवरबर्डन करोगे. दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू. सो डोंट डू दैट. सो डोंट अननेसेसरली डू एक्सेसिव स्टडी व्हेन योर माइंड एंड बॉडी आर नॉट एग्रीइंग फॉर इट. When feeling tired of preparation, go for a movie or meet a friend or watch a comedy show. Perfectly fine. 10 दिन से, 12 दिन से, 2 हफ्ते से आप लगातार पढ़ाई करे जा रहे हो. So it is quite possible that you might be little bit tired. So it's perfectly fine to go and watch a movie even when you are even when you are preparing for your exams. Be particular of your diet. As I said earlier, eat simple food devoid of spicy and oily stuff, because if your stomach is not in good shape, your mind will not be in good shape either. Now let me come to the last page. Frequently asked questions. So number 1, are these exams are very difficult? So these are the questions which I am sharing with you, friends, which a lot of people have asked me in the past. Are these exams difficult? कि CA का एग्जाम, CS का एग्जाम, CMA का एग्जाम, CPA का एग्जाम, CIMA का एग्जाम, ACCA का एग्जाम. Are these exams difficult? This is the question that I am asked, and the answer is very simple, friends. इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है और कुछ भी आसान नहीं है. Nothing on this earth is difficult. Nothing on this earth is easy. It all depends how well you are prepared. So अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके लिए आसान है, और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपके लिए मुश्किल है. As simple as that. So all these exams, neither they are difficult nor they are easy. They become easy if you prepare well. They remain difficult if you don't prepare. Passing percent is so low. So what? It is not low for you. It is low for everybody. So it doesn't really matter.
Will I be able to make a good career after completing the course? Definitely, undoubtedly, undoubtedly. But remember, all these courses that we are talking about, MBA हो, CA हो, CS हो, CMA हो, CPA हो, CFA हो, all these courses will only give you a platform. It will only give you a platform. It will give you a job. It will give you an employment. उसके बाद आप आपके जीवन में कितना आगे जाएंगे वो डिपेंड करेगा आप आगे कितनी मेहनत करते हैं, आगे कितना कमिटमेंट दिखाते हैं, आगे कितना डेडिकेशन दिखाते हैं. सो इट विल बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन हाउ डू यू डू in future after you pass the exam. But for sure, passing these exams will definitely give you a good launching pad as far as your career is concerned. How to remove boredom during preparation for the exams? So for removing the boredom during preparation for the exams, I think I have already dealt with already. Should I write one group or both the groups at a time? दिस इज योर पर्सनल असेसमेंट. आपको एक ग्रुप लिखना चाहिए कि दोनों ग्रुप लिखने चाहिए, ये सारा डिपेंड करेगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन का क्या असेसमेंट है, एंड दैट इज अ कॉल दैट यू हैव टू टेक. सो बेसिकली लुक एट, फाइंड आउट करो कि मेरे दोनों ग्रुप की तैयारी कैसी है, क्या मैं दोनों ग्रुप की मेरी तैयारी ठीक है. अगर आपको लगता है कि हाँ दोनों ग्रुप की तैयारी ठीक है, देन यू शुड अटेम्प्ट बोथ द ग्रुप्स. लेकिन अगर आपको लगे नहीं इट्स बेटर, I'm more prepared in one group, then focus on one group. Remember, passing these exams too early is not really going to give you a big advantage. So अगर आपने दो ग्रुप एक साथ पास भी कर लिए तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा गोल्ड मेडल मिलने वाला है या इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर करियर. देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. इट्स ऑलवेज बेटर डू एज पर योर कैपेसिटी. अगर आपको लगे कि मैं एक ग्रुप आराम से पास कर पाऊंगा, डू वन ग्रुप, take the second one next time, rather than writing both the groups and getting disappointed in both of them. But remember, as I said earlier, it's your personal call. You have to decide about it. How many hours should I prepare, study every day? As much as you can. जितना आप ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं रोजाना, उतनी पढ़ाई आप रोजाना करिए. क्यों? क्योंकि आपका मकसद है ये एग्जाम को पास करना. तो जितनी आप शुगर डालोगे दूध उतना मीठा होगा. जितनी आप ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एग्जाम को पास करोगे. सो डू एज मच एज पॉसिबल, एंड फॉर दैट कीप योर सेल्फ फिजिकली फिट, कीप योर सेल्फ मेंटली फिट. माई हैंड राइटिंग इज नॉट गुड, वॉट शुड आई डू? अगर आपकी हैंड राइटिंग, आई थिंक आई हैव डेल्ट दिस क्वेश्चन ऑलरेडी, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, इट्स ऑल राइट. मेक श्योर दैट योर हैंड राइटिंग इज एटलीस्ट रीडेबल. अगर आप उतना कर पाते हैं, आई थिंक दैट इज गुड इनफ. डज बैड हैंड राइटिंग लीड्स टू पुअर स्कोरिंग? द आंसर इज नो, बिकॉज द एग्जामिनर्स आर ट्रेन्ड नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड by the handwriting per se, at least consciously. Subconsciously, maybe there may be some factor, but not really so much. Does it help to give lengthy answers? Not at all. Not at all. Always give your answers to the point, and that will help you in passing the exam. Not giving the lengthy answers. Giving lengthy answers consume more time from you and leaves less time for the other questions. So don't depend on the lengthy answers. I am from the science or art background. Can I pass these exams? Of course yes. Of course yes. Just because you are not a commerce graduate does not mean you cannot become a chartered accountant or cost accountant or company secretary or any of these courses. I know many examples of chartered accountant, cost accountant and company secretaries and other professionals who did not have commerce as their main qualification, who were a science graduate or who were art graduate, but they still could become a chartered accountant. और याद रखिए, आपको कॉमर्स बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं है to become a chartered accountant. Even if you are a science
graduate, even if you are an art graduate, you can still become a chartered accountant, cost accountant, company secretary of any of these courses that we are talking about. Perfectly fine. I am from vernacular. What are my chances of passing the exam? I was also from vernacular. Till my graduation, I was in Hindi medium. टिल माई ग्रेजुएशन, यानी कि पहली क्लास से लेके बीकॉम करने तक मैं हिंदी मीडियम में था, और आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज मेरे पास में काफ़ी सारी डिग्रियाँ हैं. तो वर्नाक्युलर होने से कुछ डिसएडवांटेज नहीं है. ये इस बात सही है कि आपको इंग्लिश को पिकअप करने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है, उतना ही है, उससे बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है. देयर आर thousands and thousands example where someone from the vernacular background became a very successful chartered accountant, cost accountant, company secretary, CFA, CPA, so on and so forth. So it doesn't really make any difference. And the last question, do coaching classes help? Now remember, there are students who do not attend the coaching classes but they still pass all these exams. There are students who attend the coaching classes but who still are not able to pass these exams. So remember, the coaching class will help whom? Coaching class will help a student who is sincere, who is dedicated, who is committed, who is determined. Coaching class will help such a student. Coaching class will not make each and every student pass the exam. No, that will not happen. Coaching class has got a limited purpose to serve, and limited purpose to serve is somebody who is already ready for it. Coaching class will help him achieve his objective faster. So what you need to do, you cannot bank on a coaching class कि जस्ट मैंने कोचिंग क्लास अटेंड करी है इसलिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा, कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाऊंगा या CPA बन जाऊंगा. वो होने वाला नहीं है. पहले आपको अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना पड़ेगा. जो 9 Ds की मैंने पहले बात करी है, वो 9 Ds को अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा. उसके बाद में कोचिंग क्लास विल गिव यू सम सपोर्ट. So friends, with this we come to the close of this session. This program is also simultaneously being broadcast on Zoom and also on YouTube. So of course, and the Facebook, people who are on the Facebook, of course they cannot ask me questions because they can only hear me. They can only attend this session. But in case if any one of them has a question, they can write the question in the chat box, and if I am able to read it, I would be very happy to answer those questions. And likewise, anyone on the Zoom can also write the question, and in case if I get any question, of course I would be very happy to answer your questions. So friends, in any case, thank you so much and wish you wonderful times. पूरी ताकत से अपने आप को ये एग्जाम्स की तैयारी में झोंक डालिए. सफलता आपसे मिलने के लिए उतनी ही उत्सुक है जितनी कि आप सफलता से मिलने के लिए उत्सुक हैं. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.